Associates from जोहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मिलकरमा मुख्य खबर नु Headlines is brought to you by Khimji Jewelers. Handcrafting blessings since 1936. Khimji. काली डालखाई आज कोणार्क G20 रे ओडियांकर स्वाभिमान के बड़ मचान कोणार्क सूर्य मंदिर थीम रे विश्व नेता को स्वागत कले पीएम मोदी बाइडेन को बुझाले कोणार्क विज्ञान साडे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ट्वीट लिखले कोणार्क चक्र निरंतरता और प्रगति प्रतिफल। सीमाते पड़ुचे छत्तीसगढ़ दादागिरी नुआपड़ा जिला सीमांत जंगल के सफा करी चलीचे छत्तीसगढ़ शह शह गच काटिके जमी प्रस्तुत करुचन छत्तीसगढ़ चाषी लगभग 5 एकड़ जंगल सफा करिथिबार अभियोग सबु जानी कि छुबैछे जिला प्रशासन और वन विभाग। कलाहांडी तीजमाली उपरे विदेशी कंपानी नजर पड़वा घटना जगह छाड़वा लगी आदिवासी उपरे कंपानी गुंडागर्दी करुथिबार अभियोग खणी खुलले विस्थापित हेबे थुआमुल रामपुर ब्लॉक रो कितनी केते गाँ जीवन जाऊ पछे माइट नहीं छाड़ू बोली लुके देइथिले धमकी। आरु कॉलेज प्रतिष्ठा दिवस ने बीजेडी दलीय प्रचार टिटलागढ़ डीएवी कॉलेज प्रतिष्ठा दिवस के आईकिना दलीय प्रचार करुचन नेता मंत्री कॉलेज रो उन्नति कथा पचराबानु मुंह मुड़ीकिना पलौतबार अभियोग। आयमा पूरा खबर के नुआदिल्ली ने मूल होइछे 2 दिनिया G20 सम्मेलन इथिलागि भारत मंडपम ने पहुंचीचन विश्वर बड़बड़ नेता सेमान को स्वागत करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समकनु सुंदर कथा भारत मंडपम रो स्वागत जगाने शोभा पाउचे ओडिशार कारुकार्य ऐतिह्य कोणार्क चक्र वसुदेव कुटुंबकम थीम के नेकिना भारत अध्यक्षतार आज सभे टाकिथिबा 18तम वार्षिक G20 सम्मेलन आयोजित होइछे जहार अर्थ पूरा विश्व गुटे परिवार 10:30 बजे पहला सेशन थी वन अर्थ उपरे आलोचना होता सेंता 1:30 बजे अतिथि संगे द्विपाक्षिक आलोचना कार्यक्रम होता 3 बजे नु सेकेंड सेशन वन फैमिली उपरे आलोचना होउछे रात 7 बजे भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आड़ू अतिथि लगी डिनर व्यवस्था करा जायछि। टिटलागढ़े 3 मंत्री को कलापतका देखाले कांग्रेस कर्मी सम्मिलनी ने जोग देवा के जीवार बेल के मंत्री को विरोध करा जायछि। टिटलागढ़ परासरा गाँव में चलीथिला बीजेडी कर्मी सम्मिलनी मंत्री टुकुनी साहू शारदा नायक प्रीतिरंजन घोड़े को कलापतका देखैछन कांग्रेस कर्मी पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंह को भी कलापतका देखाबार संगे जोरदार विरोध करिछन युवा कांग्रेस कर्मी। टिटलागढ़ के जाइचन 3 मंत्री तांको कलापतका देखैचन कांग्रेस कर्मी सम्मेलन के जवाब देवा के जीवार बिल के मंत्री को विरोध करा जायछि। टिटलागढ़ परासरा गाँव में चलीथिला बीजेडी कर्मी सम्मेलनी मंत्री टुकुनी साहू शारदा नायक प्रीतिरंजन घोड़े को कलापतका देखा जायछि। पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंह को भी कलापतका देखाबार संगे जोरदार विरोध करिछन युवा कांग्रेस कर्मी। आपन देखुचन सीधा सड़क दुरुस कांग्रेस कर्मी माने रास्ता रे थुआइकिना जवाब मागुचन सरकार को जेंता कि आपन जानिथिले टिटलागढ़ के 3 मंत्री आज जाइचन तांको कलापतका देखैचन कांग्रेस कर्मी सम्मेलन के जोग देवा के जीवार बेल के मंत्री को विरोध करा जायतिला। टिटलागढ़ परासरा गाँव ने ये विरोध देखबा के मिलिथिला मंत्री टुकुनी साहू शारदा नायक प्रीतिरंजन घोड़े को कलापतका देखा जायछि तार संगे पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंह को भी कलापतका देखैचन युवा कांग्रेस कर्मी।
आपण देखि पारुचन फास्ट विजुअल टिटलागड़े 3 मंत्री को कला पताका देखिकिना विरोध करा जाइए और विरोध करिचन कांग्रेस कर्मी माने कर्मी सम्मिलन के जोग देवा के जीवार बेल के मंत्री मान को विरोध करा जाइतिला। टिटलागड़ परासरा गाँ ने चली विरोध मंत्री टुकुनी साहू शारदा नायक प्रीतिरंजन घोड़ेकर संगे पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंह को भी कला पताका देखाबार संगे जोरदार विरोध करा जाइए। जिंदाबाद 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 जय जय जवाब दियो सीधा सड़क विजुअल केंता मंत्री मान को विरोध करिचन कांग्रेस कर्मी कला पताका देखई किना विरोध करुचन कांग्रेस कर्मी। टिटलागड़े 3 मंत्री को कला पताका देखिचन कांग्रेस कर्मी कर्मी सम्मिलन के जोग देवा के जीवार बेल के ई विरोध देखबा के मिलिथिला। टिटलागड़ परासरा गाने चलीथिला बीजेडी कर्मी सम्मिलन। ई बाबद अधिक सूचना लगी टिटलागड़ आमर प्रतिनिधि अजित साहू आम संगे फोन लाइन रे जोड़ी हिचन। अजित आपन तो जानी थे कि जेनता मंत्री माने जेन के भी जाउचन कला पताका देखिकी तांको विरोध करा जाउचे। आज हेंदा टिटलागड़ के जाइते 3 मंत्री तांको कला पताका देखिकी विरोध करा जाइछे। देखुन दादा आज टिटलागढ़ के 3 मंत्री जन पूर्वतन मंत्री भी आसिले। आज पहला डीएवी कॉलेज रे कॉलेज रो प्रतिष्ठा दिवस थिला सेनो कार्यक्रम सारी करी परासरा जाउतले से समय किसी कांग्रेस कर्मी माने कला पताका देखन कुर्सु थाने से कला पताका देखन एवं से विभिन्न कार्य को विरोध करिछन काहे बेले विभिन्न दाबी रखिछन एवं से नूतन बस निर्माण करवा लगी विरोध करिछन एवं कुर्सु ठाजे उते नदी जेन अच्छे मंजूर बैरेज अन्यत्र स्थानांतर करवा लगी दाबी करिछन किंतु बारंबार स्थानीय मंत्री जो टुकुनी साहू दाबी करथिले किंतु नि सुनवार द्वारा आज कांग्रेस कर्मी माने तीव्रतर विरोध करवा सहित कला पताका देखिछन एवं टिटलागढ़ बारंबार एभलिया प्रतिश्रुति मिछ प्रतिश्रुति मंत्री मान देछन जहाँ द्वारा आज कला पताका स्थानीय कांग्रेस युवक मैंने देखेछन। अनुराधा कांग्रेस कर्मी माने आउ काना काना दाबी रखिछन जेंता कि टिटलागढ़ के जिला करबार प्रतिश्रुति भी दिया हितला किंतु एबे तक टिटलागढ़ के जिला नहीं करा गला। इनी कि ना किछि सूचना मिली छे कि जिला बाबत ने किछि कहा जाई छे के मंत्री मान कराडू देखुन आमे जेतबल कॉलेज डीएवी कॉलेज थे मंत्री को आम प्रश्न पचारे से मुँह मुड़ी चली जहाँद्वारा किसी प्रतिक्रिया नहीं मिल पारा एवं जो कांग्रेस कर्मी मैंने रही कहते जिला का भी पहला प्रसंग अच्छे तार संगे बस स्टेशन भी नहीं पार्बार आरटीआई केन्द्र भी नहीं पार्बार एवं विभिन्न ब्रिज समस्या देखा जाए जहाँकि विरोध कर कांग्रेस कर्मी मैंने सूचना देछन जदि सरकार जदि नहीं शुणवे आगामी दिन तीव्रतर विरोध होगा कांग्रेस कर्मी मैंने सूचना देछन एवं मंत्री मैंने जिन भाया मिछ प्रतिश्रुति देछन जहाँद्वारा अंचलवासी भुआ बोलिक भोट हटौछन ताके आज कांग्रेस कर्मी मैंने तीव्रतर विरोध कर आपण जेंता सुनुथिले टिटलागढ़ प्रतिनिधि अजित कुमार साहू जहाँ सूचना देउथिले प्रतिश्रुति पर प्रतिश्रुति मिलुचे किछि पूरा नहीं हबार जार विरोध करथिले आज कांग्रेस कर्मी। टिटलागढ़े जेतेबेले 3 मंत्री संगे पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंह बिल जाइतिले तांको जोरदार कला पताका देखिकिना जोरदार विरोध करथिले कांग्रेस कर्मी माने। बहुत बहुत धन्यवाद अजित आपनकर सूचना लगी। आगे भी खबर देखमा याद समय गोटे छोटिया ब्रेक आमर प्रतिटी सकाळ आरंभ हेउ श्रीमंदिररू ओ ओडिशार कोण अनुकोणर देवालयरू ईश्वरंक दिव्य आळतीरे मंगलमय हेउ आपणंक दुनिया। अर्गस न्यूज रे दिव्य आळतीर दर्शन करंतु। मंगल आळती सीधा प्रसारण प्रत्येक सकाळ 5टारू 6टा। भारी फुले से गिर रही नानी 11
गाँ बजार शेयर मार्केट प्रतिटी खबर अपडेट ऋण पाइबार सरल उपाय आउ रहिबनी दलाल भय इन्वेस्टमेंट प्रतिटी ज्ञान शेयर मार्केट चिनिब आपण मन टैक्स स्लैब बुझिबाकू लागिबनी कष्ट सोशल मीडिया रु केमिति मिलिबो प्रचुर अर्थ गैजेट पाई नेबाकू पड़िबनी टेंशन आमे कहिबू बिजनेस रो सरलतम डेफिनेशन अर्कस बिजनेस ओं वक्रतुंड महाकाय ग्रह नक्षत्र सीधा संपर्क आपणक भाग्य भविष्य सह आम मुनि ऋषि तपस्या साधना अनुसंधान आधार आपणक भविष्य जानिबार माध्यम हेबु आमे देखंतु आमर विशेष कार्यक्रम भाग्य भविष्य लाइव रे सांस्कृतिक राजधानी राज्य राजधानी कटक भुवनेश्वर प्रथम आपको दृश्य देखा चाहिए क्राइम पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स बिजनेस ब्रेक उत्तर स्वागत खबर के फिरमा सेडे नुआ दिल्ली भारत मंडपम ने होतबार 2 दिनिया G20 शिखर सम्मेलन के आईथिबार IMF MD को संबलपुरी डालखाई रे नाच देखिकी प्रशंसा करिचन बलांगीर लोके सेंता ओडिशार कला संस्कृति विश्व दरबार रे पहुंचैतिबा लागि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिचन बलांगीरिया लोके 2014 रे केंद्र सरकार रे मोदी शासन आसला पर ओडिशार कला संस्कृति ऐतिह्य को निहाती भाव रे गुरुत्व मिली गतकाली देखिथिबे जे आमर इडर सम्बलपुरी नृत्य जेनटा डालखाई तार ऊपर IMF डायरेक्टर खुशी होकर निजे भी सेना नाची पकईन निहाती इटा गोटे आमर लगी आमर संस्कृति आमर ऐतिह्य लगी आमर परंपरा लगी गोटे गर्वर विषय और सब बड़ गर्वर विषय है जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जे अच्छा जो बाइडेन तांको कोणार्क उपरे विस्तृत व्याख्या करिछन एवं यार ऐतिह्य उपरे जनईछन से मध्य या उपरे खुशी व्यक्त करिछन जे भारत रे एंता गोटे ऐतिह्यटे अच्छे कोणार्क एवं ओडिशार कोणार्क को नेगिरी केंद्र सरकार जो प्रकार प्राधान्य देइछन निहाती भाव रे एटा स्वागत योग्य पदक्षेप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वर्षर इज्जत के विश्व स्तर में बहुगुणित करिछन G20 शिखर सम्मेलन जेन हिसाब से प्रस्तुत करा जाइछे एटा गोटे बहुत खुशीर कथा भारत लगे गर्वर कथा एवं G20 शिखर सम्मेलन रे डालखाई नृत्य डालखाई गीत परिवेशन करवाटा किंबा आमर अंचल ऐतिह्य संस्कृतिर पराकाष्ठा प्रदर्शन करवाटा ई अंचल प्रति प्रधानमंत्री सम्मान प्रदर्शन करिछन तेणु तांकर प्रति आम समस्त कृतज्ञ एवं तांको धन्यवाद दउछु। फेर छत्तीसगढ़ दादागिरी सीमांत ने ओडिशार जंगल के सफा करके चाष जमी करुचे छत्तीसगढ़ शह शह गच काटिकिना सीमा के निजर अख्तियार के नेबा के षड्यंत्र करुचे नुआपड़ा जिलार सीमांत अंचल सीमा विवाद समाधान होउनैथिबार बेलके रास्ता नाला पहाड़ उतारू इहादे जंगल उपरे नजर पकईचे छत्तीसगढ़ नुआपड़ा सीनापाली देखुन ई रिपोर्ट। फेर छत्तीसगढ़ दादागिरी ओडिशार जंगल के सफा करिकिना करूछन चाष जमीन लगभग 5 एकड़ जंगल सफा करिथिबार अभियोग चुप होइछे जिला प्रशासन आर वन विभाग नुआपड़ा जिला सीनापाली तहसील सीमांत ने देखबा के मिली छे छत्तीसगढ़ दादागिरी चुनचुनी पहाड़ ने थिबार बांजीकुटा नाला पाखर जंगल के सफा करिकिना जमी प्रस्तुत करूछन छत्तीसगढ़ चाषी पाखापाखि 5 एकड़ जंगल के सफा करबा संगे से जगह ने डाली चाष करूछन छत्तीसगढ़ चाषी सीमांत चुनचुनी पहाड़ार सीमांत अंचलर सीमा विवाद समाधान हेउ नथिबार बेलके दिन के दिन छत्तीसगढ़ दादागिरी बढ़तेल जाउछे आर ई उपरे ना ही राजस्व विभागर नजर अच्छे ना ही वन विभागर नजर चुनचुनी हटा बोलिकरी नॉर्मल पराने गोटे जगह अछि सेटा छत्तीसगढ़ लोग जंगल काटी करी ध्वंस करी चाष करी आसुଥିଲେ पुनर्बार से जगह ना छत्तीसगढ़ लोग जंगल के 5-6 अगर जंगल काटले ना चाष करवार लगी
अरे फॉरेस्ट वाला देखबार कथा फॉरेस्ट वाला भी नहीं देखबार से मार मामू कहला कि सेटा काटा होची गजम बस काजी द फोटो अछि बिर कहले यार तब जगर काटा होती मिलती कहां काटता सीमांत बांजीबुटा नाला जंगल ओडिशा भितरे आउथिबार बेलके छत्तीसगढ़ चासी माने किंतु इटाके छत्तीसगढ़ सरकार पटा थिबा कहिकिना बेधड़क जंगल सफा करि चालिछन। ओडिशार खामखियाली सीमा निर्धारण के नाई डरी किना धीरे धीरे सीमा के छत्तीसगढ़ के नाई जीवा के छत्तीसगढ़ षड्यंत्र चलैथिबार अभियोग करिछन लोके। सियाड़े विवाद ने पचराबानु सीमांत ने कड़ाकड़ी पाट्रोलिंग करा जिबा बोली कहिछन खडियाल वनखंड अधिकारी सुशील कुमार त्रिपाठी। सर जमीन आम तदंत कर देखलु जे छत्तीसगढ़ लोक मैंने आसिक इना गच काटिछन एवं बिरी चाष अन्य चाष सब करिछन तो यार गोटे तदंत हवा दरकार। जदि जमीटा रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहे ताहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट या के कब्जा करवा कथा जदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ताहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब्जा करी जेन एनक्रोचमेंट जेन हेइछे इटा के हटावा कथा। उपयुक्त तदंत करबार व्यवस्था करिछि एवं हमर पेट्रोलिंग ग्रुप को तागिद कर देछि एवं से जगह तैनात कर देछु तेणु जहाँ गछ कटिछि आउ कटिवार ये नहीं एवं जहाँ कटिछि ता ऊपर हमर पुंखानुपुंख तदंत हेबो। ओडिशा सीमांतर एकड़ एकड़ जंगल सफा करुछे छत्तीसगढ़ हेले चुप होइछे जिला प्रशासन। छत्तीसगढ़ दादागिरी के अटकाबाने फेल राय सरकार। विवादीय जगार स्थायी समाधान लागिर दाबी करुछन ओडिशार सीमांतवासी। नुआपड़ा जिला खडियालनु गणेश रणांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कलाहांडीर तीजमाली उपरे विदेशी कंपानी नजर पड़वा घटना जगह छाड़वा लगी आदिवासी उपरे कंपानी गुंडागर्दी करुथबार अभियोग होइछे। खणी खुलले विस्थापित हेबे थुआमूल रामपुर ब्लॉक रो केतनी केते गाँ जीवन जाऊ पछे माइट नहीं छाड़ू मोली लुके धमकी देथिले हेले यादे गुंडागर्दी करवा के उतरिला न कंपानी। खणी खनन हेले परिवार उपरे 1500 टंका भत्ता देवार कथा कहूचे कंपानी। 1500 टंकार परिवार केंता चलबे बोली प्रश्न करिछन आदिवासी। कोटी कोटी टंकार खनिज संपद लुटिकिना लोकंकु मात्र 1500 टंकार घिनबा के चेष्टा करुचे कंपानी। भाता 1500 देवी बोलुचन हेले आमे कुआडे पाई पारबू अइन देशर लोक आसी करी धरी जाउचन भाता आमे लोके बुझैलु ने सुझैलुन बोली लोकर जलारी फरारी इनकी धरसन था आमे किछि जानबार नै। केतटा भाई मन के रायगड़ा थाना रे नै करी रखिथिले केते दिन तांकर केस भी फाइनल नै थियो से माने हमर मां माटी के एटा हला पूर्व पुरुष ठानु आमे पहाड़ तले बंची आसुचु ए पहाड़ धर्मे ही आमे बंचुचु से मन डरा डुपा करी मारपीट कर नै जाउचन मुझे हेंता को नै बोले ना कुछ लोग नियम गिले भी केते लोग नै जाइचन और तीजमाली लोग भी नै जाइचन तब हम तो तीजमाला लड़ाई कर जीवन गल फस जाउछ ना। बलांगीर जिला तुरेकेला ब्लॉक मांदला गाँव श्रमिक मृत्यु घटना तेलंगाना राज्य के दादन खटबाक जाइकिना सेन श्रमिक मृत्यु होइतबार बेलके परिवार लोके आनिछन किंतु हत्या अभियोग। मृतकंकर परिवार लोके कहवा हिसाब दलाल दैतारी माझी गला डिसेम्बर 27 तारीख 2022 के रात 10 बजे तेलंगाना राज्य मेदक जिला चिन्नागनपुर गाँ की इटा काम करवा के नहीं थिले। तारपरे से घर के नया बानु परिवार लोके खुजाखुजी करिकिना किछि खबर नहीं पाले। इने की गला जनवरी 22 के तुरेकेला पुलिस को लिखित हिसाब से अभियोग जनईथिले भी पुलिस इमानकर गुहारी नहीं सुनी थी। बलांगीर अभावनीय घटना जन्म कला परे नुआ जन्म शिशु के छाड़ी दी किना फेरार मारिछे माँ। जिला अवस्थाती नवजात शिशु कन्या के उद्धार करिछन मेडिकल कर्तृपक्ष। बलांगीर भीमबई मेडिकल महिला मेडिसिन वार्डर पाइखाना ने महिला प्रसव करिकिना छु मारी थिबार सूचना मिली। आज सकाले गुटे शिशु परित्यक्त अवस्था पड़िथिबार स्थानीय रोगी देखिथिले। इने के खबर पाइबा उतारू मेडिकल कर्मचारी माने पहुंचिकिना शिशु कन्या के उद्धार करिछन। आके भी खबर देखमा इहादे समय आर गुटे छोटिया ब्रेक रो। सांस्कृतिक राजधानी राज्य राजधानी कटक भुवनेश्वर प्रथम आपको दृश्य देखने चाहिए क्राइम पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स बिजनेस जीवन जीविका और संघर्षर आखि देखा कहानी
ट्विन सिटी बड़ खबर प्रतिदिन संध्या 5:30 केवल अर्गस न्यूज रे। मनरे हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अनुराधा पाणिग्राही आपन लगे नहीं आपन बहुत क्यूट को नहीं गोटे तेलुगु गीत बा तेलुगु विषय टिके किछि को నేను మీకు ప్రేమిస్తున్నాను किछि मु बुझबे ఐ లవ్ యు देखंतु एथर स्टार्टक रे अभिनेत्री तथा कंठशिल्पी अनुराधा पाणिग्राही शनिवार राति 8टारे। आपणको चतुर्दिक घुरिला भली अनुभव हेउछि कि अधिकांश समय मुंड बुलाउछि कि या हुए तो ब्रेक उत्तर स्वागत खबर के फिल्मा कॉलेज प्रतिष्ठा दिवस ने बीजेडी दलीय प्रचार एंता दुरुस्त देखा के मिली टिटलागढ़ डीएवी कॉलेज ने महाविद्यालय 56तम प्रतिष्ठा उत्सव ने जोग देकिना निज दलर प्रचार कर बीजेडी दलर नेता मंत्री टुकुनी साहू मंत्री प्रीतिरंजन घोड़ई और पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंह जोग देथिले। कॉलेजर उन्नति बाबद में कहवा बदले राजनैतिक बयानबाजी करिछन। अलगा आड़े कॉलेजर उन्नति कथा पसराबानु मुंह मुड़ीकिना पलि जाइछन जहा के नहीं किना यादे प्रश्न करिछन विरोधी। जोर धरला जूनागढ़ के जिला मान्यता दाबी कलाहांडी जिला हजारे बछर पुराना शहर होउछि जूनागढ़ के जिला मान्यता दाबी रे मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी आड़ू अनिर्दिष्ट समय तक गणधारणा दिया जाइछि। जूनागढ़वासी एकजुट होइकिना लंकेश्वरी मंदिरनु पूजार्चना कला उतारू जूनागढ़ के जिला मान्यता दाबी नहीं गोटे विशाल मशाल शोभायात्रा बाहरी के पूरा शहर बुली परे ब्लॉक सामने विक्षोभ करिथिबार देखबा के मिलिथिला। जिला परिषद बैठक रे उपस्थित सभ्यों को प्रशासन गुरुत्व नहीं देवार हट्टगोल रे सरला बैठक जनसाधारण समस्या समाधान नहीं भारी पारला। बौद्ध प्रशासन के जंगल मंत्री और कंटामाल विधायक कर तागिद जिला परिषद ऑफिस पंचायत भवन ने जिला परिषद बैठक अनुष्ठित हो जाइए। जिला परिषद अध्यक्षा प्रवासिनी दास को अध्यक्षता थी अनुष्ठित होती बैठक ने पंचायती राज और पानीय जल विभाग मंत्री प्रदीप अमात कंधमाल सांसद अच्युत सामंत कंटामाल विधायक मोहित रणाकर संगे 3टा ब्लॉक अध्यक्ष और सबु जिला परिषद सभ्य उपस्थित थे। बैठक मूलनु उपस्थित सदस्यों दाबी आ मत के जिला प्रशासन गुरुत्व नहीं देउतबार अभियोग होता। आज्ञा आम प्रतिथर सबुथर जितेबाला भी जिला परिषद मीटिंग होती सब बड़े आम बारंबार से कथा कहूँ जे आमर जेन माने मेंबर अच्छा जिला परिषद जेन एजेंडाटा किछि दिन आगु जदि तैयारी हेले आम मान के 2-3 दिन आगु जदि सर्कुलेट हेले आम सब डाटा पाइक पढ़ी प्रिपेयर होकर आसमु। G20 सम्मेलन रे केंद्र मंत्री एस जयशंकर को प्रश्न has been exceptional. Events have been spread across 60 cities which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions and heritage as well. The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a Green Development Pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai principles for a sustainable and resilient blue economy, and the Deccan principles on food security and nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure.
The Indian presidency's proposal of a One Future alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions. This is particularly relevant to managing global debt vulnerabilities. So, as you can see, there have been many far-reaching and very consequential policies and decisions that have been agreed upon today. Keeping all that in mind, I would, at this stage, request Finance Minister to highlight the key issues from the finance track. Thank you, Jaishankarji. As was said by the External Affairs Minister, under the guidance of Honorable Prime Minister, India's G20 presidency has worked for the theme One Earth, One Family, One Future. So today we are in a position to adopt, through the finance track, people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations. We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow the core developmental outcomes or concerns of the global community that demand collaborative solutions. So today, as I look back at the 10 months of Indian presidency, I am left with gratitude and satisfaction. I can confidently state that the Indian G20 presidency has walked the talk. Now, let me share with you just some of the key achievements of the Indian presidency, the finance track. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. The second under the MDBs, strengthening of MDBs, is the G20 Independent Expert Group on strengthening MDBs, and this was established and it has submitted its volume 1. The first report, their report consists of 2 volumes. The first volume has already been submitted. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for
the bigger, better, and more effective MDBs. The third point in strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here, the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBRD headroom to support low-income and middle-income countries. And the fourth, endorsement for the G20 roadmap for implementation of the recommendations of an independent panel on capital adequacy framework of the MDBs. So the CAF recommendations are focused on enabling MDBs to use their existing resources effectively. The roadmap estimates, this is going to be of interest for the media, the roadmap estimates that implementation of the CAF and the measures thereby will potentially yield additional lending headroom of approximately $200 billion over the next decade. So through these achievements, India has harnessed the opportunity provided by the G20 presidency to effectively articulate and embed the priorities of the Global South in the larger global conversation on the MDB reforms. I move to the second, laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB, and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all three foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and a platform to safely share personal data without compromising privacy. So embedded this concept in the G20 financial inclusion agenda by formulating G20 policy recommendations for advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. This set of recommendations cover 5 aspects: use of DPIs and accelerating financial inclusion, fostering well-designed DPIs, regulatory and supervisory aspects of DPI, institutional and governance arrangements by DPI, and ensuring customer protection. So DPI has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for Financial Inclusion. The implementation of the Financial Inclusion Action Plan, as well as the policy recommendations on DPI, will remain as areas that will continue to be heard across the G20 forum. So the fourth one, which I'd like to highlight, is the debt resolution under the common framework and also beyond
the common framework. Since its establishment in 2021, only Chad as a country has had its debt restructured. The others have been waiting. So since India took over the G20 presidency, good progress has been made in the ongoing country cases under the common framework of debt treatment, and the three countries in that are Zambia, Ghana, and Ethiopia. We've also succeeded in using the G20 platform to also put in place a coordinated mechanism to address the debt situation of Sri Lanka, which is outside of the common framework. So G20 will continue discussing the policy-related issues linked to the implementation of the common framework and make periodically such appropriate recommendations. The launch of the Global Sovereign Debt Roundtable, which is co-chaired by IMF, the World Bank, and also the G20 presidency, to enhance the conversation among the various stakeholders and address current shortcomings in the debt restructuring process. That has now become an institution which is actually acting as a catalytic agent in getting resolutions done faster. The fifth point under the finance track, which I'd like to bring to your notice, is the financing of cities of tomorrow. Key concerns of the low-income countries and emerging markets is always been to mobilize resources for financing sustainable, resilient, and also inclusive cities of tomorrow. The G20 principles, which are issued for financing cities of tomorrow to promote effective and efficient use of financial resources to support urban development that is socially inclusive, environmentally responsible, and economically sustainable, are now all under the framework of the principles which have been used. The MDBs and the development financial institutions can use these principles in their financing plans for urban infrastructure. The sixth, which I'd like to quickly draw your attention, is the two-pillar solution on global taxation, the international taxation. We've made substantial progress in the two-pillar solution, and the work has also happened on the exchange of information on immovable property transactions between countries. There is a launch of the pilot program of the South Asia Academy in India for tax and financial crime investigation in collaboration with the OECD. The seventh, on which I'll elaborate, is mechanism to support the timely and adequate mobilization of resources for climate finance. Till date, the conversation was focused on calling on developed countries to say, where is that $100 billion US dollars, which didn't come. But Indian presidency adopted an action-oriented approach, and the G20 explored mechanisms that can support timely and adequate mobilization of resources for climate finance, facilitating access to multilateral climate funds and enhancing their leverage and ability to mobilize private capital has also been our focus. Special focus again on development, demonstration, deployment of green and low carbon technologies. Now the list of outcomes, I've pointed out 7, just 3 more which I'll not go into the detail, but you can take it as enough has been done on that. I'll also put it out for your consideration. Scaling up sustainable finance for social sectors, health and education. Technical assistance for capacity building. Then global conversation on transition policies, especially to include range of options, both on pricing and non-pricing. And the third one, enhancing finance health collaboration so as to cover many other work streams as well. So I listed out 7, elaborated on them, 3 others which have not elaborated, but on all of them, substantial progress and outcomes have been achieved. India's received tremendous support
from the G20 members across the table. The outcomes of the Indian presidency are a testimony to India's commitment to multilateralism and for international cooperation. We assure the upcoming Brazilian presidency of our strong support and to continue the momentum on key issues of global importance. I now hand over back to Minister Jaishankar. Thank you, Nirmala ji. May I now request G20 Sherpa Amitabh Kant to bring out the major outcomes from the Sherpa track. Thank you, Minister. So first of all, when we started India's presidency, the Prime Minister had said that India's presidency must be inclusive, it must be decisive, it must be ambitious, and it must be action-oriented. The New Delhi Leaders' Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue, which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders' Declaration. This is one declaration without a single footnote and without any chair's summary. This is a complete statement with 100% unanimity. This demonstrates both the Prime Minister's and India's great ability to bring all developing countries, all emerging markets, all developed countries, China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus. Secondly, this has been the most ambitious presidency in G20's history ever, because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annexed documents are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. Thirdly, this presidency, if you go through the New Delhi Leaders' Declaration, it has a huge India narrative, it has a huge India footprint, whether you look at the Deccan high-level principles on food security, whether you look at the Chennai high-level principles for blue ocean economy, whether you look at the Goa roadmap for tourism, whether you look at the Gandhinagar implementation roadmap for land restoration, or Jaipur call for enhanced MSMEs, all this will leave a huge footprint of India in G20. So one of the key achievements to my mind, one is that we've achieved a very major green development pact in today's world of climate action and climate finance. Every single country has come together to focus on green development pact, which has financing, which has focused on global greenhouse gas emission by 43% by 2030, which has a doubling provision of adaptive finance by 2025, which has a global biofuel alliance, which has completely new principles of life for sustainable development, which has ending plastic pollution, which has reducing disaster risk, and a whole lot of other components put together as the Green Development Pact of the leaders of G20 countries for a greener world of tomorrow. Secondly, there is a huge focus on accelerating progress on sustainable development goals, because the COVID had hit a vast segment of our population. There's a G20 action plan to accelerate progress on SDGs. There is a huge focus on education, health, nutrition. There's a huge focus on creative industries like culture as a transformation for SDGs. And there is a huge focus on inclusive and resilient growth in this entire things, some of which, most of which the finance minister has spoken about, so I'm not talking. But I think one of the biggest achievements of this New Delhi Leaders' Declaration is
what we've achieved on women-led development with a massive focus on women empowerment and gender equality. And this focuses on reducing labor force participation gap, bridging the gender digital divide. There's a huge focus on gender inclusive climate action. There's a completely big focus on women's food security, nutrition and well-being. And we've created a new working group on empowerment of women, which Brazil will carry forward. There's the next key big focus has been on technological transformation and the digital public infrastructure. Before we started our presidency, there was a vacuum on the digital world. There was no definition of digital public infrastructure. There was no framework. Both the definition and the framework has been accepted by G20, and for the first time, there is a new financial architecture for digital public infrastructure. There is also a global digital public infrastructure repository. There's a huge new focus. For the first time in the world, the G20 leaders have focused on artificial intelligence. They have focused on cyber security. Also, I would say that one of the key aspects of this presidency has been its focus on developing and emerging markets. No document of G20 has had such an immense focus on developing and emerging markets and the voice of the global south as this particular document has. This is a document of the global south. This is a document of the developing countries which came together and spelled out their priorities. And India has been the spokesperson of all the global south and spelled out their priorities in this document. This document also condemns terrorism. It denies terrorist groups safe haven and freedom of operation and many other things. But let me assure you that for the planet, there are several new initiatives on climate and health, and this has been an inclusive G20. This has been a very a G20 where the leaders give a direction to global agendas, and this has laid the foundation for very bold action. But more than anything else, it has amplified the voice of global south. It has also demonstrated that India has a huge capacity of bringing the world together and leading the world in developmental and geopolitical issues as well. So thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Amitabh. Following up on my colleagues, let me add a few more remarks. While noting that the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, the leaders recognized that they can have significant consequences for the global economy. In particular, they dwelt on the ongoing war in Ukraine and the impact it has had, especially on developing and least developing nations still recovering from the pandemic and economic disruption. The 3 F's, food, fuel, and fertilizers, were issues of special concern. Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted, no one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed, it should be a global one. Obviously, there are differing viewpoints and interests at play in regard to the various issues under discussion. However, we have been able to find common ground on all of them. As a result, we can justifiably state that under Prime Minister Narendra Modi's guidance, the New Delhi summit has given clear directions for the
growth and development of the global economy in the years ahead, we would be glad to respond to your queries. Thank you. Thank you very much, sir. Before I open the floor for questions, let me just mention that the document in question, the New Delhi Declaration, has been uploaded on the website about an hour ago, and please have a look at it. Let me open now the floor. I see gentleman at the back. Yeah, right there at the back on the left. Yeah. Parikshit, right? Yeah, please. No, not there. Behind you. One question to... Please introduce yourself and the organization. I'm Parikshit Luthra from CNBC TV 18. My question to Minister Jaishankar and G20 Sherpa Amitabh Kant and also Finance Minister Nirmala Sitharaman. How difficult was it to have consensus on the wording of the Ukraine-Russia war? This has been a difficult point in every conversation in the G20. There were several drafts circulated. We heard of a new draft this morning as well. Were there any countries which actually helped India in bringing consensus on the table? I see a name. I see the lady here. Please, ma'am. Yeah, you. Ma'am, good afternoon. My name is Ruchi Bhatia from Bloomberg News. The Ukraine paragraphs also mention about the work that Turkey did with respect to getting some sort of a consensus on the issue of the Black Sea grain deal as well. Where are things with respect to that, and can we expect any movement on that critical issue anytime soon, because it does concern several nations across the globe? Thank you. So hand there, the gentleman, yeah, right at the back on the left. Microphone, please. Yeah. This is Manas Pratim Khuyan from Press Trust of India, PTI. In one of the paragraphs referring to the Ukraine conflict, it is mentioned that there were different views and assessment of the situation. So how do you explain this line about having differences on the Ukraine crisis? The question to Foreign Minister or the G20 Sherpa. Gentleman here.